LSAT के लिए प्रिपेयर कैसे करूँ, क्योंकि देयर इज वेरी लेस मटेरियल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. I sent you हाँ. eight, nine Yes sir. documents. Have you completed all of it? Not all of it, but I have done 3-4 of them. Like 4 are or more remaining. Hmm. But sir, then the material ends. Like I don't have any Yeah, I material understand. for LSAT. Abhi, I think you should spend more time on sectionals. ठीक Okay. है? Okay. उसमें आरसी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना. सीआर is like majority of the paper, right? Because you have two Hmm. sections of CR. You have to Hmm. practice a lot of CR, and CR के लिए LSAT US के papers निकालो. That's LSAT US के लिए. US ठीक वाला है. LSAT होता है ना, उसका papers हम्म. निकालो, CR करो. I know it's a bit tougher than what LSAT India में पूछते हैं, but it's not exactly very different. I ओके. think that's the best source for you to practice. ओके. ठीक है? ओके. एंड सर जो AR है, Hmm. आई एम सीइंग दैट दे आर आस्किंग मोर ग्रुपिंग डिकोडिंग ये सब, like in the sample papers also sir, so we can expect AR वही आएगा. देखो AR का they have very categorically said कि ज्यादा डेटा सेट्स और सीटिंग अरेंजमेंट पे फोकस है उनका. बट दैट डजंट मीन दैट यू विल स्टिक टू व्हाट दे हैव गिवन इन द सैंपल पेपर. थोड़ा इधर उधर भी चले जाना, बिकॉज कोडिंग डिकोडिंग वगैरह जो है ना, लाइक इट्स ऑलवेज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ AR. सो यू कैन ओके. नॉट जस्ट लीव इट असाइड एंड जस्ट बी लाइक सैंपल पेपर में जो दिया है वही मेरा सिलेबस है. थोड़ा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ओके but सर. focus on what is there in the sample paper more, because ओके. it is a huge possibility they can just replicate the pattern entirely. ओके. Okay. ओके, गॉट इट सर, थैंक यू. Okay. ठीक है. Anyway, so I'm recording this. I'll put this on the YouTube channel as well. तो देखो, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सिम्बी का पैटर्न इस बार चेंज कर दिया इन लोगों ने, इन द सेंस दैट द सेक्शंस आर नॉट चेंज्ड. ओके. सो देयर इज लॉजिकल, लीगल, AR, RC एंड GK. ठीक है. What they have done is the fact that they have removed the WAT. रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट जो था ना, जिसमें आपको ऐसे लिखना पड़ता था, दैट्स रिमूव नाउ. इट्स जस्ट पर्सनल इंटरव्यू वर्थ 30 मार्क्स, एंड देन योर एंट्रेंस टेस्ट जो था 60 को 50 पे स्केल डाउन करते थे वो. सो इट वाज 50 प्लस 50 फॉर द रिटन टेस्ट, 30 फॉर द पर्सनल इंटरव्यू एंड 20 फॉर द रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको ऐसे लिखना पड़ता था. रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट इस बार हटा दिया इन लोगों ने पूरा. सो नाउ योर एंट्रेंस टेस्ट विल कैरी मोर वेटेज. Here this weightage was 50. Now the weightage has gone up to 70, which means your test, specifically your test, becomes very very important. Very very important. ठीक है. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना. दे हैव चेंज्ड इट. वैट पूरी तरह हटा दिया है. पीआई का वैल्यू इज 30 ओनली, बट रिटन टेस्ट का जो वैल्यू 50 था, स्केल्ड इट डाउन टू 50 मार्क्स लिखा था यहाँ पर, अगर आप 2023 का नोटिफिकेशन देखोगे तो. ओके. नाउ इट्स नॉट स्केल्ड इट डाउन टू 50 मार्क्स, बट इट्स स्केल्ड अप टू 70 मार्क्स. सो दिस इज गोइंग टू कैरी 70 मार्क्स का वेटेज, एंड देन देयर विल बी अ शेड्यूल फॉर योर पर्सनल इंटरैक्शन सेशन जो ऑनलाइन होता है. ओके. तो ये याद रखना. सी दिस, दे हैव रिमूव्ड इट. तो इस चीज पे याद रखना कि रिटन टेस्ट की वैल्यू, आपकी एंट्रेंस टेस्ट की वैल्यू इज मोर. इट वाज 50, नाउ इट हैज बिकम 70. ठीक है. सिलेबस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यू कैन जस्ट लुक एट इट. एंड जीके इज वेरी एलेट ओरिएंटेड, वन लाइनर जीके पे फोकस करते हैं वो. एंड इट्स अ मिक्स ऑफ स्टैटिक, बेसिक स्टैटिक क्वेश्चंस, बट मोस्टली करंट अफेयर्स. 9 to 10 questions are current affairs. 12 questions RC. जनरली क्या करते हैं, दो पैसेजेस पे 6 questions का फॉर्मेट होता है, या तीन पैसेजेस पे 4 questions का फॉर्मेट होता है. AR में they go to syllogisms, direction, sense, blood relations. Okay. Things about legal reasoning में you have to stick to principal fact. Okay. And you have to stick to foreign terms and foreign maxims. इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना. लॉजिकल रीजनिंग इज बेसिकली, दिस इज CR. तो CR और AR आपका सबसे यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है. सो दिस इज समथिंग विच इज कॉमन विथ LSAT एंड SLAT. Majority of the paper is comprising of reasoning. Okay.
External knowledge. Excuse me, sir. Yeah, please ask. So for legal reasoning, we have to learn like all the maxims and everything. You need to know, yes, you need to know a couple of maxims and all, because हर बार नहीं पूछा इन लोगों ने. Every time they Mhm. haven't asked legal maxims, but Mhm. occasionally they drop one or two maxims. To read that Okay. also. And so for general knowledge, we have like for how many months we have to do it देखो very like in a solid way. it should be 1 year. 1 year का span रखो, ठीक है? So it should be till like if the exam is happening in May because it's an online exam, right? Yes, sir. तो आपको अप्रैल तक करना पड़ेगा यहाँ पर, because you don't know when the paper will be set. Okay. Okay, sir. Thank you. Anything else anyone wants to ask about Simbi? Please ask. So the Yeah. online exam will be at the test center or how? So this will be at the test center. LSAT टेस्ट सेंटर पे नहीं होता है. LSAT आप घर पे देते हो, but it's Oh, obviously monitored. Proctored exam होता है. So if you try to cheat, if you try to move your head around, the camera, the AI will detect it and like मत करना basically. That's my point. LSAT घर पे देते हो. SLAT is a center based exam. Okay. Anything else anyone of you want to ask? कोई questions पूछने हैं आपको सिम्बी के बारे में? Then we'll So go for to Simbi, like what can we prefer for Simbi, like which books or what resources? रिसोर्सेज के लिए. देखो जनरल रीजनिंग के रिसोर्सेज आप सबको पता है. एम के पांडे इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिसोर्सेज टू रेफर फॉर रीजनिंग. सो यू कैन स्टिक टू एम के पांडे स्पेशली फॉर क्रिटिकल रीजनिंग. ए आर के लिए यू कैन रेफर टू आर एस अग्रवाल. ओके, बट आई ऑनेस्टली विल से ना, सिम्बी इज वेरी वेरी लाइक ए आर सेक्शन एंड जीके दोनों बहुत रिजेंबल करते हैं एलेट का पैटर्न. So you can also practice from the PYQs of ALET, but then sectional agar like I'm pretty sure most of you are registered with a coaching institute, so you can dig through their sectional tests. Okay. फ्री रिसोर्सेज आप सबको टेलीग्राम पे मिलेंगे. इफ यू वांट मी टू फॉरवर्ड इट ऑन द ग्रुप, आई विल फॉरवर्ड इट ऑन द ग्रुप ऑल्सो. मेरे को जहां से भी फ्री रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है. बट फोकस ऑन सेक्शनल्स. जहां से भी आपको सेक्शनल टेस्ट्स मिले, सीआर के सेक्शनल्स जैसे एम के पांडे इज अ गुड एग्जाम्पल. बट इफ यू डोंट वांट टू बाय अ बुक, फ्री मटेरियल इज वेरी रेडिली अवेलेबल सेक्शनल टेस्ट्स के लिए. सेम गोज फॉर ए आर. So like when we give CLAT sectional test, the timing is more like, and when we give SLAT, then the timing must be less, I guess. या So, what's the देखो, I'll tell you one thing. Sorry to yes, sir. interrupt. एग्जैक्टली 60 क्वेश्चंस हैं. क्लैट में 120 क्वेश्चंस होते हैं. क्लैट में 2 घंटे होते हैं, यहाँ 1 घंटा है. तो इट्स लिटरली ऑलमोस्ट द सेम प्रोपोर्शन, राइट? नहीं सर, जैसे आई एम आस्किंग कि जैसे जब हम लोग लीगल के सेक्शनल्स देते हैं तो वी आई वॉट यू लाइक आई यूज टू डू कि मैं 30 मिनट्स लीगल को देती थी, तो आई यूज टू सेटअप टाइम कि मेरे को 30 मिनट्स में देना है, या मैं जिस भी कोचिंग से ओरिएंटेड थी तो वो भी उतने ही टाइम में सेक्शनल लेते थे. बट फॉर दिस वी नीड टू गिव लेस टाइम, तो उतने टाइम के सेक्शनल्स के लिए व्हाट कैन वी डू? देखो, आई थिंक यू कैन स्केल अप. जैसे 12 क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव लाइक ऑलमोस्ट 12 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, राइट? 1 मिनट पर क्वेश्चन. तो उसके हिसाब से यू कीप द टाइम स्लॉट. ये चीज याद रखो कि लीगल रीजनिंग और जीके बहुत लेंदी नहीं होता इसका स्लैट का, ठीक है. सो व्हाट यू कैन डू इज लाइक सेक्शनल टाइम अगर 30 क्वेश्चंस का सेट कर रहे हो तो ट्राई टू रैप इट इन 30 मिनट्स. लीगल में यू डोंट हैव ओके टू सर. स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम बिकॉज इट्स नॉट करंट अफेयर्स बेस्ड, एकदम पैसेज हैवी बेस्ड लीगल नहीं पूछते हैं. इवन इफ दे आस्क पैसेज बेस्ड लीगल, पैसेजेस बहुत छोटे छोटे होते हैं. ओके. सो यू कैन स्केल इट डाउन. ओके सर. मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से चलो. एंड जीके इज ऑलवेज लाइक यहाँ पर तो वन लाइनर्स ही पूछते हैं. सो जीके अगेन इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम हियर. 12 क्वेश्चंस है, लिटरली 1 मिनट 1.5 मिनट में आप जीके कर लोगे, ठीक है. ओके सर. यूज दैट टाइम फॉर अदर सेक्शंस. ओके सर, थैंक यू. एनीथिंग एल्स एनी वन ऑफ यू वांट टू आस्क? ठीक है. तो सिम्बी का फॉर्म इज आउट. ओके. बाय द वे, इफ यू डोंट नो, registration has opened. The deadline is 12th of April. I'll just screen share. रुक जाओ. Yeah.
सो ये रिलीज कर चुके हैं वो. सो डेट्स आई हैव टोल्ड यू 5th एंड 11th में है डेट्स. एंड रजिस्ट्रेशन लिंक इज हियर. यू कैन जस्ट गो टू दिस वेबसाइट एंड देन यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो क्लिक करके. ठीक है. 2 एग्जाम्स है. ये बहुत कंफ्यूजन आया है. 2 एग्जाम्स होते हैं. ठीक है. यू कैन अपीयर फॉर बोथ द डेट्स एंड उसमें से बेस्ट स्कोर जो होगा, हायर स्कोर जो होगा, ठीक है, वो कंसिडर किया जाएगा. लोअर स्कोर को इग्नोर कर दिया जाएगा. सो इट्स हाईली रिकमेंडेड. इफ सिम्बी को आप बहुत ज्यादा ऊपर रखे हो अपने अपने चॉइस में या अपने प्रेफरेंस में काफी ऊपर रखा है, तो इट्स रिकमेंडेड दैट यू गिव बोथ द एग्जाम सो द हायर स्कोर इज टेकन. ओके. सो सर याद रखना. हाँ. सर दोनों if you want to give तो फॉर्म भरने के लिए something must be different. So they give, when you start filling the option ना, form भरना start करोगे ना, तो they'll ask you कि what dates you want to appear for. So you choose both of the dates, and like obviously the fee will be higher. Okay. Yes sir. Okay. Anything else you want to ask? इंडिविजुअल फी लगेगी दोनों के लिए. हाँ, it's 2250 per test. Okay. And 2 बार भरोगे तो 2250 प्लस 2250. एंड जिन कॉलेजेस के लिए आप भरोगे, so there's a program registration fee of 1000 rupee per college. Okay, so जितने प्रोग्राम्स के लिए, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर SLS पुणे का BLLB कोर्स, राइट, सो 1000 फॉर दैट. SLS नोएडा का भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो 1000 रुपी एक्स्ट्रा फॉर दैट. ओके, सो इट्स गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव अफेयर. तो प्लीज बहुत सिलेक्टिव होके करना इसको चूज. इफ मन Sir, Pune or Noida campus are only Sir? good, I guess. I will recommend only these 2 campuses. इसके अलावा these are very recent, Nagpur and Hyderabad. I think you shouldn't go to Hyderabad or Nagpur. You rather will have a better like a career, legal career, if you stay around Delhi NCR rather than going to Hyderabad or Nagpur. Okay. Someone else was asking something. Please go ahead. Yes sir. सर भरना तो सबके लिए पड़ेगा ना. I mean chances बढ़ जाएंगे कि we get into it. Yeah, but Hyderabad और Nagpur मत भरो. That's my point. हम्म. पुणे और नोएडा भरना दोनों डेट्स के लिए. Also सर जो आप बोल रहे हो 1000 for each college तो 2 बार फॉर्म भरने के लिए it'll be more or the same amount? It will be more. Okay. आप पूरा एडमिशन, आप जब फॉर्म प्रोसेस में जाओगे, देन यू विल गेट द आइडिया कि मतलब वो टोटल अमाउंट लास्ट में आपको दिखेगा कि कितना है. अकॉर्डिंगली ओके. सो लेट्स अज्यूम इट्स लाइक इफ यू चूजिंग बोथ द कॉलेजेस, आइडियली इट शुड टर्न आउट टू बी 4250 फॉर SLS नोएडा एंड पुणे फॉर 1 day. ओके. Sir, they offer both BA and BBA LLB. या दे ऑफर बोथ द कोर्सेज. उसके लिए आपको अलग अलग अप्लाई नहीं करना पड़ता. उसके लिए आपको एक सेकेंड, आई एक्चुअली गो थ्रू द फॉर्म. एक बार मैं ना फॉर्म खोल के देख लेता हूँ एक्चुअली आपके सामने. Okay, sir. लेट मी जस्ट सी दिस. Applications open. Has anyone registered for it अभी? आप में से किसी ने अभी तक रजिस्टर Sir, किया? अभी full payment नहीं की है, but हाँ last step तक पहुँच गए हैं. हाँ, तो एक बार चेक करना उसमें, ठीक है, कि like when you do the payment, how much they are asking, like the full payment. सर इट इज लाइक कि पहले सबसे तो वो आपसे पर टेस्ट का मांगेंगे, फिर जब आप पूरा फॉर्म भर दोगे पेमेंट के बाद से, देन दे विल फर्दर आस्क कि आपको पुणे का चाहिए तो 1000 मोर प्लस नोएडा का चाहिए तो 1000 मोर, ऐसे बढ़ेगा वो. Sir, it's 4500 for both the tests, and उसके बाद 1000 each, so around 6500 हो जाएगा if you do it for SLS Noida and Pune. No, are you sure? Because SLAT का it's 2250. Yeah, for both the days it's 4500 plus Noida and both the days is 4500 and then Pune is 1000 and Noida is 1000. So Yeah, 6500 में you can appear for both the colleges, both the days. yeah. Yeah, ठीक है. Any other questions for Simbi? No, ठीक है. Let me go to then. By the way, अभी किसी का फॉर्म IP का भी नहीं निकला है. Lot of people were DMing me about Indraprasth.
नहीं निकला है फॉर्म अभी, जनरली फेब के अराउंड निकलता है. एंड सेम गोज फॉर MHCET, उसका भी फॉर्म अभी नहीं निकला है. सिम्बी इज आउट. बाकी LSAT का आई हैव टोल्ड यू 10th of January is the last date to fill the form for the 20th 21st January attempt. Okay. Sir, Yeah. for LSAT it will be 2 times. So if not in once, I can go and fill the form again for appearing it. Yeah. So Yeah. they have, if I don't remember properly, but I think हर एंट्रेंस के लिए ना देयर आर सेट नंबर ऑफ सीट्स. सो यहाँ पर ना जैन में अगर आप एग्जाम देते हो ना तो थोड़ा एडवांटेज मिलता है, बिकॉज मे अटेम्प्ट्स के लिए ना सीट्स कम बचती हैं. तो जैन वाला अटेम्प्ट बिल्कुल देना आप लोग, इफ यू आर कंसिडरिंग जनरल. दैट इज इफ यू आर कंसिडरिंग जनरल. ओके. तो लाइक अगेन अफोर्डेबिलिटी वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. Remember this, the highest scholarship they offer, I got to know through internal sources, is 75% of the tuition fee, which is 9 lakh. If you get like a 95 plus percentile, then you have a chance to get a 75% scholarship on the tuition fee, which is 9 lakh rupees. Okay. And in my opinion, placements ke liye, because Jindal has a lot of volume, right? And Jindal has people who are already connected. So if a person is going from a neutral point of view without any connections or without any sources, then I think SLS Pune will be a better option. But again, if you can afford Jindal and you are from Delhi NCR or nearby, then Jindal might turn to be a better option. बट प्लीज मेक दिस डिसीजन केयरफुली, बिकॉज जिंदल में बहुत पैसा दे रहे हो आप. ओके. द वैल्यू फॉर मनी, यू हैव टू जस्टिफाई द वैल्यू फॉर मनी. सो विदाउट स्कॉलरशिप, इफ इट्स एन इश्यू, it's a very high fee. You can consider not applying for Jindal. If money is not an issue, then you can go for Jindal, because Sir, is the scholarship worth it, right? Like I mean, ki for all 5 years and then, after the package which we will get. बताता हूँ. So होता क्या है, get the scholarship initially, ठीक है. Initially you get the scholarship on the basis of your LSAT percentile first year में, and then you have to be in the top 10% of your batch or something like that. There's a criteria for that. So if you continue to be in like the upper cream of your batch, you can get the scholarship continuing throughout. So you have to be in like the top of your batch to keep getting this scholarship. अगर आपने कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपकी स्कॉलरशिप वहीं पे रुक जाएगी. सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. फर्स्ट ईयर में वो परसेंटाइल पे देते हैं, उसके बाद वो GPA पे देते हैं स्कॉलरशिप. आपने कॉलेज में कैसा किया है उसके बेसिस पे. ठीक है. So also, what's the chances of getting in both of them, Jindal and Symbiosis? देखो Jindal is like because the number of seats are very very high, and not a lot of people go for Jindal because obviously the fee is an issue. Yeah. Mm-hmm. So Jindal has a higher chance. Like you getting Jindal has a higher chance. But again, the fee. That's the only thing my concern is with regards to Jindal. Symbiosis also you have a fair chance because it's not मतलब बहुत कम seats नहीं है. But now understand Simbi Pune के लिए बहुत competition होगा. Okay, so make your decisions accordingly. My general advice to all of you, this is a sweeping advice. Simbi, if you can afford Jindal, LSAT, MHCET for Maharashtra, especially people who are from Bombay or Maharashtra state. But even if you're outside, then try. Okay. Apply for the this IP, Indraprasth University. Give CUET very very importantly because of the campus law center DU, Delhi University, and BHU is also going to take admission through that. Okay. So these exams, SLAT, MHCET, LSAT, IPM का जब IP यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा, because they will take according to the CLAT course, and CUET, these exams all of you should give. Then see wherever you're getting your calls from. जब कॉलेज मिल जाए तो डिसीजन टाइम आएगा. अभी आपको पूरा फोकस एग्जाम पे देना है. डोंट थिंक अ लॉट अबाउट द कॉलेजेस राइट नाउ. ठीक है.
if financial constraints हैं, then you have to be picky about obviously filling the forms. But CUET or MHCET आप तो भर ही देना, because the forms are very very cheap. I think MHCET is 750 rupees. CUET का आप सबको पता है, it's like very subsidized. महंगा है तो स्लैट है, महंगा है तो LSAT का फॉर्म है, बाकी सारे फॉर्म्स काफी सस्ते हैं, तो बाकी So, हमें अप्लाई करना ही है. या come again. giving LSAT and SLAT both and other exams for law, do I need to give CUET? I think you should, because like Campus Law Center DU is a very very good option, especially for people who are aspiring to become judges or who are wanting to practice, because like that will give you a lot of advantage. And अगर UPSC prep करना है, judicials का prep करना है, you want to practice, you want to litigate, so DU is going to be a very good option for all of that. So ideally मैं बोल रहा हूँ, please do not run away from giving a lot of exams. Give a lot of exams, give all of the exams if you can. Then look for options. आपके पास कौन कौन से आपको colleges मिल रहे हैं? Sir, Then you make the pick. Sir, I also yeah, sir. so I was asking that does Campus Law Center provide the 5 years PLB? Come again. You are not very clear. I was asking that does Campus Law Center, that he provide the 5 years PELLB? That's what I'm saying. They will take CUET scores this year. ठीक है? तो CUET का फॉर्म भरना है आप लोगों को. That's what I'm saying. Okay? Sir, but isn't it tough to get into DU? It is tough. It is tough. Probability तो कम है ना? Because the seats are very less. That doesn't mean that आप फॉर्म ही नहीं भरोगे, है ना? फॉर्म तो बिल्कुल Sir, yes. sir, so I gave CUET and उसमें along with the subject you also have to score very well in like 2 or 3 other subjects, right, to get a seat. Yeah. So won't that be harder to like just choose कि कौन से subjects मेरे strong point है और उसके बाद फिर उन तीनों में score करूँ? नहीं, देखो सिंपल सी बात है, आपके 12th में जो भी स्ट्रेंथ्स है ना, सो फॉर एग्जांपल Yeah. ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, you are a humanities student for example, and you think that pol science is a strong point, economics is a strong point, so you take legal studies plus pol science plus economics, you have the general studies ka paper which is GK, and then you have the language papers. So try to fill as much as forms as possible. Right. Sir, Yeah. another thing. Yeah. So for LSAT, if I give LSAT, उसके results तो काफी जल्दी आ जाते हैं, and I'm assuming they will come before symbiosis वाला test का. So would it be wise to go for it, general का? Because honestly, I also gave LSAT SAE in June this time, and the seats open at a percentile which is very low. Honestly, they start giving offers from people that have scored 60 percentile and above. So usme is it wise or should I No, wait I'll tell until you what. symbiosis wala? When you give LSAT, Jindal gets the scores of people who have applied for the college. Okay? Yeah. Apply करने का मतलब है नहीं कि आपका admission हो गया. You apply for it and then you wait. How much Yeah. scholarship are they offering you based on your percentile score? And then you take a decision. You can in any way back off, right? You can be like, nee, this is still not affordable for me, so I don't want to take admission. Just back off. But what I'm asking is like, would it be wise to take a seat and then wait for symbiosis, or would it be wise to just like leave it? देखो completely? मैं बता रहा हूँ. So what happens? You can keep staggering the decision, because again Okay. maybe the exam होना है and your score is valid for 5 years. Okay. ठीक है? So you can just keep on waiting because seats खाली रहेंगी. May maybe because obviously the exam will happen again. So then you can use that January score for May वाले vacancies also. Okay. ठीक है? So just wait for them to contact you and tell them कि sir मैम इतना scholarship दे दूंगा, आप आ जाओ, ये वो. Just wait for that call to come and then you can text on the channel. Okay, so this Okay. happened, what to do. Okay? Sir, Yeah. so for other, like for MHCET, the students of other Maharashtrian state, like other than Maharashtrian state,
So, like, how much we have to score in order to secure the seat there? So out of 150, it's highly recommended that you score at least above 110. At least Okay. 110 you need. एंड द पेपर इज डैम इजी. जीके बहुत सिंपल आती है वहाँ, बेसिक जीके आती है. लीगल इज ऑल्सो बेसिक, बट लीगल में अगेन मैक्सिम्स वगैरह ना, लीगल टर्म्स, लीगल मैक्सिम्स, ये सब काफी पूछते हैं, तो उस पर अच्छे से काम करना है एमएचसीटी के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, the paper is fairly simple. English is very very basic. It's very scoring, no negative marking. तो always like किसी, आई थिंक सिम्बी में भी देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, एमएचसीटी में भी देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सो यू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन 150 out of Okay, sir. 150, you attempt everything, and then you wait for the best of the result. Okay. Sir, Yeah. hello, sir. Yeah. Sir, the way you shared some focus areas for humanities students for CUET, could you also share this for science students? What sections they should pick up ideally? आइडियली मैं वही बता रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ्स पे डिपेंड करेगा वो, लाइक व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, because nobody cares about ki you want to do law, why are you picking physics. No, it's just that the fact that you have scored high in the subject area makes a lot of difference. So if you think physics is something which is a strong suit for you, you opt for physics. If it's chemistry, you opt for chemistry. Whatever the strong suit is, you go for that. But Okay. सबसे ज्यादा important क्या है? Legal studies. Sir, I missed that part. Sabse important? Legal studies. Huh? Sorry, sir. Legal studies. Legal studies. Legal studies. Okay. So, Okay. So, for legal studies, you get the book of 11th and 12th ka legal studies, the CBSE book. It's freely available. PDF is freely available on the website. Legal studies ke book ki, and you complete that first. That's the priority, because that score will be the score which at which the most focus will be. Okay. So सबसे पहले उसको अच्छे से करो. That should be the target. Sir, this will be the NCRT book, the 11th and 12th legal studies one. You can use the NCRT, but I advise that you use the CBSE book. CBSE book. Yeah. Okay. Okay, sir. ठीक है, sir. Thank you so much. Okay. हेलो Yeah. सर लाइक आई एम अ ड्रॉपर, सो अगर मैं सीयूईटी दूंगी तो उसमें मेरे को सब्जेक्ट जो चूज करने पड़ेंगे. लाइक आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैं चूज करूंगी, बट उसके हिसाब से स्टडीज तो मतलब मेरा 1 ईयर डिले ही हो गया. तो मतलब मैं दोबारा सारा You have to revise. But मैं बार बार बता रहा हूँ ना कि बाकी सब्जेक्ट्स में even if you don't score very well, मोस्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका? इंग्लिश और लैंग्वेज पेपर्स के मार्क्स, आपका जीएस का मार्क्स, जनरल स्टडीज पेपर का मार्क्स, एंड योर लीगल स्टडीज का मार्क्स. दीज 3 पेपर यू नीड टू एस. तो सर इससे वो फैकल्टी ऑफ डीयू का फैकल्टी ऑफ लॉ वाला मतलब ओपन हो जाएगा अगर Because they will majorly focus on your legal studies score. They don't care. But I thought that was from we had to do CLAT for that. No. Last year they took on the basis of CLAT scores, because उन्होंने admission बहुत late किया था last year के लिए, because that was the first batch. But this year they are going to take from CUET. Okay. ठीक है. एक बार notification आएगा तो it will be official, but this is what I have heard from people who are in law fac right now. Okay. ठीक है. Thank you. Yeah. So my parents, they suggest me for both Jindal and Symbiosis. What would you recommend? Like, What do you want to do after 5-year law? ये बताओ. sir, corporate law? Cooperate करना है तो I will recommend. So Delhi and Mumbai, they are not an issue, right? Yes, sir. It's not an issue, right? Either it's Delhi or Mumbai. Both. Yes, sir. Then I will say कि try for both. If you are, मैं basically आपको बोल रहा हूँ जो सस्ता पड़ रहा है वहाँ चले जाओ. If you are getting that scholarship in Jindal, okay, you can go to Jindal. Yes, sir. If you're not getting the scholarship in Jindal, Jindal is going to be at least a double
of what Simbi will cost you. Simbi's tuition fee is 4.15 plus the living and food expenses, which I think even if you count 25,000 per month, that will be around 2.5 lakhs, because आप पूरे साल रहते नहीं हो वहाँ, 2 महीने की 2 महीने की 4 महीने की छुट्टी आपको साल में मिलती है. So it will cost you around 6.5 lakhs per annum, everything. On the other hand, Jindal will cost you around 12-13 lakhs per annum. So if you are able to get that scholarship in Jindal, and if you are from Delhi NCR, then you can go to Jindal. Else SLS Pune is a better option in my opinion. Jindal में, लेकिन Jindal is a very good option if you get the scholarship. So if you So, get, but like my parents are not very concerned about the money and all. They're like, it's okay, whatever you wish to and all. So, you are like, from Delhi NCR, right? academically. Yeah, sir. So दे के देख लो. Academically तो it's like Jindal is तो class apart because the faculties are top class, top class faculties. So you can go to Jindal in my opinion then. It's just that the crowd is not scrutinized properly, because literally anyone with money can get Jindal, because आपको पता है कट ऑफ 60 percentile से start होता है, and 60 percentile is really not a big deal, right? So they are not very stringent about, you know, taking out the cream of the students. So that is where Jindal ka crowd gets compromised. But that doesn't matter if you are focused, if you're driven, if you're using the resources of the college properly, because the library is awesome, the faculty is very very good and very qualified, and the facilities are all there. So Jindal is not at all, like I always tell students ki Jindal and Simbi both are in top 10. So, what's the cutoff for Simbi? Simbi ka cutoff, it will depend, it varies. Dekho, you have to score above 50 out of 60 marks. 50 नंबर आपको लाने हैं जैसे, and it's very very easy to get 50, very easy, trust me on this, because RCCR LR में ना नंबर ही नहीं चाहते. It's very basic what they ask. थोड़े बहुत नंबर जाते हैं जीके में, थोड़े बहुत नंबर जाते हैं AR में. So it's very easy for you to get 50. But again, attempt every question, don't skip a question. Like GK में भी take a guess. Okay? Sir, LSAT और Okay, SLAT sir. दोनों में negative marking तो है ही नहीं, तो it's Exactly, easy. exactly. Attempt everything. That's my point. सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो. ना स्लैट में है, ना एलसैट में है, ना एमएचसीटी में है. सीयूईटी में नेगेटिव मार्किंग है, वो आपको पता है, बट दैट्स Excuse me, वेरी sir. वेरी लेस. सीयूईटी का भी नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम है, तो वहां भी बच्चे सारा अटेम्प्ट कर देते हैं, एंड दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी. समवन वाज Sir, आस्किंग. हाँ पूछो. sir, is DU and BHU worth it for a person who wants to go for corporate sector? देखो, कॉर्पोरेट के लिए BHU आई वोंट रिकमेंड, बिकॉज BHU डज नॉट हैव अ वेरी गुड कॉर्पोरेट प्लेसमेंट रिकॉर्ड. आई थिंक DU में, बिकॉज इट विल बी अ सेकेंड बैच, थोड़ा डाइसी होगा. दैट इज वाई आई विल टेल यू कि DU के ऊपर प्रेफर सिम्बी, प्रेफर जिंदल, इवन USLS, द IP मेन कैंपस, यू कैन प्रेफर. ओके, Okay, बट sir. दैट डजंट मीन, देखो BHU एकदम बाहर करो. BHU से कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ही दिक्कत होती है. इट्स अ प्रॉपर ट्रेडिशनल कॉलेज, दे डोंट केयर अबाउट योर प्लेसमेंट्स, especially corporate placements. But any other than BHU, DU can be a good option, but Simbi and Jindal are better than the campus law center, because again, from the students, I have been friends with a couple of students from the 3-year law. Campus law center आपको प्लेस करने में हेल्प नहीं करेगा, but it is still have a reputation, and you will be in Delhi, which means you can intern at very very odd times. जैसे internship का एक टाइम होता है जहां पर सारे NLUs में छुट्टी होती है. So basically let's say May, और लेट्स से जुलाई में सेशन स्टार्ट हुआ, नवंबर में सारे एनएलयूज का सेशन एंड होता है. सो नवंबर दिसंबर यू कैन नॉट गेट एन इंटर्नशिप, बट सिंस यू आर इन DU, देयर वेयर अटेंडेंस इज नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट, यू कैन इंटर्न इन सितंबर, यू कैन इंटर्न इन अक्टूबर, यू कैन इंटर्न इन अगस्त ऑल्सो. एंड उस टाइम पे लॉ फर्म्स के पास बहुत इंटर्न्स नहीं होते, so then you can intern, given the fact that you are in Delhi and DU has a good reputation. But again, stating that fact,
DU is a good option, but it's not better than Jindal or Simbi for corporate placements. Okay? Okay, sir. Anything else anyone wants to ask about? देखो आईपी का निकलेगा फॉर्म, मैं तुरंत वो ग्रुप पे डाल दूंगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. सेम गोस सर फॉर ऑल्सो जैसे आपने सिम्बायोसिस की स्कॉलरशिप के लिए बताया था, इज इट द सेम जिंदल एज वेल? जिंदल. नहीं, जिंदल में सिम्बायोसिस का स्कॉलरशिप नहीं बताया अभी तक आपको. आई टोल्ड यू अबाउट द जिंदल स्कॉलरशिप. ओके एलसैट के परसेंटाइल पे दे ऑफर द स्कॉलरशिप. सिम्बी ओके में आई हैव टू रिसर्च थोड़ा, सिम्बी में है कि नहीं कुछ ऐसा. मैं ना ब्रोशर भेज देता हूँ सिम्बी का. एक काम करता हूँ, आई विल सेंड यू द ब्रोशर ऑफ सिम्बी. ठीक है. ऑल्सो कंसिडर निर्मा, अप्लाइंग टू निर्मा यूनिवर्सिटी. इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल. अहमदाबाद में जो है, the admission form is open and it has a good reputation. And Ahmedabad, being in Ahmedabad, it's also it also gives a lot of opportunities, because then you have the gift city, right? So gift city में 2-3 law firms की branches हैं वहां पर, and वहां पर जो बच्चे हैं ना, वहां पर निर्मा के बच्चे intern करते हैं. So if you want to get placed, and Ahmedabad is not something which you are like, नहीं अहमदाबाद नहीं जाना. If you're okay with Ahmedabad, you can also apply to Nirma. Last date they have not given yet. Forms are open. Nirma University में apply करने के सर लिए are open. Yes, yes, yes. सर व्हाट अबाउट यूपीएस देहरादून? I won't recommend UPES at all. Placement records are not good. मुश्किल से 5-10 बच्चों के placements होते हैं. That the package is very very average. मतलब UPES, ये मतलब ये सारे colleges ना, you don't worry about these colleges, because they are always there. जून जुलाई में जब अगर भगवान ना करे कुछ ना मिले, तो ये यूपीएस आपको ले लेगा बहुत इजीली. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके. Sir, what is the CLAT cutoff for Nirma? निर्मा जनरली टेक्स अराउंड 3000, 4000, 5000 AIR. बट कट ऑफ इस बार रिलीज नहीं किया इन लोगों ने अभी तक. आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बट जनरली हिस्टोरिकल ट्रेंड 3000, 4000, 5000 के अराउंड ही कट ऑफ होता है निर्मा का. ओके. Okay, sir. और ये 2-3 चीजें और सुन लो. लाइक पीआई के लिए ना, जैसे सिम्बायोसिस का रिटन टेस्ट आपने दे दिया, यू कैन सी दैट इसमें वैट इग्नोर ही कर दिया है पूरे पैटर्न में. आई डोंट नो हाउ दैट हैज हैपेंड. आई नीड टू गेट सम क्लैरिफिकेशन ऑल्सो, बिकॉज पता नहीं उन्होंने क्या किया, यहाँ से वैट हटा ही दिया है. तो आई विल हैव टू चेक, बिकॉज इस टेबल में मुझे वैट का दिख ही नहीं रहा 20 मार्क्स का वेटेज. ओके. सो मोस्ट लाइकली इट्स नॉट देयर. वेरी वेरी क्लियरली समझ जाना, सिम्बी में वैट हटा दिया है. इट्स जस्ट द Sir, पीआई एंड जस्ट द रिटन टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट. sir, अगर अब 70 मार्क्स का हो गया है तो पुणे के लिए एटलीस्ट 60 स्कोर करना पड़ेगा. और 55 to 60 यू हैव टू क्रॉस. नहीं देखो, एंट्रेंस टेस्ट का मार्क तो 60 ही है ना, उसको स्केल अप कर रहे हैं वो. Means please elaborate. 60 क्वेश्चंस. अब 60 में जितना भी आएगा आपको मार्क्स, इट विल बी कन्वर्टेड आउट ऑफ 70, बेसिकली दैट. Okay. So if you are getting, let's say, 30 marks out of 60 marks, you are Yes, sir. getting 35 out of 70 marks. Okay. So that's called scaling up. Okay. तो वो आपका 70 के स्कोर पे 35 ऐड हो जाएगा, एंड देन पीआई में 30 में जितना आएगा, दैट विल बी एडेड टू योर फाइनल स्कोर आउट ऑफ 100, एंड देन उसके बेसिस पे पूरी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, एंड देन पीपल विल गेट द कॉल्स, एंड देन पीपल विल बी वेट लिस्टेड अकॉर्डिंगली. ठीक है. Okay, sir. तो पीआई के लिए मैं एक और चीजें बताता हूँ. न्यूज़पेपर इज मस्ट. पीआई के लिए ना न्यूज़पेपर पे फोकस करना. पीआई के लिए फोकस ऑन थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड यू, बिकॉज पीआई में ना दे विल आस्क यू ओनली ओपिनियटेड क्वेश्चंस. They will ask you opinions on things which are going around you. So they might ask you questions like, what's your opinion on abrogation of Article 370? Do you think it was right? Do you think it was wrong? Because they want to look at कि आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट करते वो. याद रखना, पर्सनल इंटरव्यू में they don't test your knowledge, they test
how articulate you are when you are arguing, when you are giving reason to your decision. अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछूं कि why do you think Nirma is better than UPS? Do you think Nirma is better than UPS? You will say yes. Then I'll ask you why do you think so, and then you'll have to give good reasons to it. And if you give good reasons, if you are able to convince me, which means you are going to score above 25 very easily in PI. तो पर्सनल इंटरेक्शन में ना कॉन्फिडेंस मैटर्स, आर्टिकुलेशन मैटर्स, आप कितने अच्छे से अपने आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट कर रहे हो इफ यू आर जस्टिफाइंग समथिंग, ठीक है. एंड मॉक, मैं आई ट्राई टू डू अ मॉक इंटरव्यू, मतलब मैं आपके सामने आई ट्राई एंड गिव अ पर्सनल इंटरेक्शन ताकि आपको एक आइडिया पड़े किस तरह से क्वेश्चंस को आंसर करना है. बट दैट विल कम लेटर, दैट विल कम आफ्टर रिटन एग्जाम्स. अभी पूरा फोकस 70% वेटेज है रिटन एग्जाम का, पूरा फोकस रिटन एग्जाम पे रखो अपना. ओके, एंड प्लीज गिव द एलसैट जनवरी वाला, पीपल हु आर कंसिडरिंग जिंदल. ओके, Also, sir, how is it marked, the interview? how is it marked? It's marked out of 30 and वहां पर they'll see how are you articulating your arguments, are you making fair points, you are not trying to faff. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आप डायरेक्ट होके, अगर आपको पता है तो आप आंसर कर रहे हो, नहीं पता तो यू आर जस्ट very straightforwardly telling them कि okay, I don't know the answer for it but I'll try and attempt, instead of faffing. गलत सलत चीजें मत बोलना, कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है. Just be very very calm. And so, what if somebody is not able to answer like any of the questions they That's ask? okay, you can just tell them कि sir I'm not very sure about the answer, but then you can tell them, you will just answer, ask me a question. आप अभी मुझसे क्वेश्चन पूछो, पूछो, ask me anything. Please go ahead, ask me anything. I'll tell you how to answer that question. अच्छा, किसी को पूछना नहीं क्या, सोच नहीं पा रहे क्वेश्चन? So let's assume that you Sir, have, opinion about your opinion about the thing that Supreme Court has declined same-sex marriage. I'm not very aware about the judgment, to be very honest, but I will try my best to answer that question. ऐसे करके आप आंसर करते हो अगर कुछ पता नहीं होता आपको, ठीक है. You have not come across that thing or you have not read it, but you will try your best to answer that question. Okay, Okay, sir. ऐसे बोलना. So we can directly tell them that we aren't aware about it. Yeah, but you will try your best because it's like, Yeah. है ना, it's a personal interaction, so you can't be just like मैं नहीं पता. You will try to form some opinion then and there because that impresses people. ठीक है. Okay, चलो. Anything else any one of you want to ask? निर्मा का एक बार अप्लाई कर लेना, देख लेना. It's a good college in my opinion, so you can go and register for it. MHCET का अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है. Last year it came on 27th of February and that too when exam was in April. इस बार मई में एग्जाम है तो हो सकता है कि 27th February के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा. So don't worry about MHCET right now. Same goes for Guru Gobind Singh Indraprasth University. 22nd of February को last year आया था. So February third week you expect IP का notification also. January में नहीं आएगा. IP का January में नहीं आएगा. MHCET का भी January में नहीं आएगा. सिम्बी का फॉर्म आ चुका है, भर लो. LSAT का फॉर्म 10th January तक क्लोज हो जाएगा, उसको फिल कर लो. And just for people who are preparing for CUET, after you have given LSAT, if you are giving LSAT, start studying legal studies. Okay, and be aware, न्यूज़पेपर मत छोड़ना प्लीज. न्यूज़पेपर मत छोड़ना. आई एम टेलिंग यू, न्यूज़पेपर से आधा काम आपका हो जाएगा एग्जाम का. यस, प्लीज आस्क. Sir, for Jamia Millia Islamia, that's through CUET as well? No, GMI is conducting its separate entrance exam. Okay. So they also notify their exams around February last week, March first week. Sir, I've heard it's a good college for law. Yeah, it's a good college, but I won't recommend if you want to, like, please also people who are taking a drop,
Do not go for a full drop. I will advise go for a partial drop. If you're confident about taking a full drop, you just give your 12th exam. You can then consider a full drop. But Jamia is a good college if you want to look for a partial drop. I had a student who was studying in Jamia and she was also preparing for CLAT on the same time. And Okay. Jamia gives you a lot of time for prepare for your next attempt also without wasting an year because you anyway will have Jamia as a backup. So colleges like DU, Delhi University, Government Law College, Mumbai, BHU, okay, USLLS. So I'm talking about Indraprasth University. These colleges give you a lot of time because they are not very strict about your attendance requirements. So you can prepare on the side if you are in these colleges. You can prepare for your next attempt of CLAT or ALET or any other exam. So that is something which is very lucrative to a lot of people. A lot of people are thinking of doing that, and you can also think about doing that. Okay. Anything else any of you want to ask? So, Yeah. like, I'm preparing for boards, and LSAT is in Jan. Yeah. So, is it like I won't be well prepared for it because I'm preparing for boards That's also? okay. I'll tell you something. It's that this is the reason why LSAT does not ask GK and math because they are not trying to test your knowledge. They are trying to test your aptitude. So what you have to do, you have to just take out half an hour or 1 hour. आधा घंटा भी निकाल लोगे ना, just to practice some CR, just to practice some AR, and just to practice some RC. Like keep 1 hour aside every day. Not every day. मान लो अगर आपको कोई एग्जाम है, it's okay if you're not doing anything about the exam. Just 1 hour का practice. So first of all, what I recommend, please, you know what subjects are going to be asked in these exams. सबसे पहले ना सारे मटेरियल्स को एक जगह इकट्ठा कर लो, printouts निकाल लो, and keep it them on your table so you don't have to like you know scavenge for material. आपके टेबल पे मटेरियल्स पड़े हैं, you sit for 1 hour, you pick some paper, you solve that paper, you analyze that paper, and you're done with it, and then you can go back to your board ka prep. Do not dedicate a lot of time for LSAT because LSAT is not a knowledge based exam, it's an aptitude based exam, and that's the best thing about LSAT. So you can just keep on practicing your sections for not a lot of time. Just be consistent. Just be consistent. That's what I'm saying. Consistent raho. Okay. Sir, I tried to find material for LSAT. I did not find any, but then you had shared the papers, previous year papers and all. So is it okay if I only practice those? Yeah. You can stick to that. You can complete those 7-8 papers. And if you're done with them, you can just redo it again. You can just redo it again because आपका ना brain उस frame of mind में आ जाएगा on how to solve those specific types of questions, and that is what LSAT expects you to do. And so what else can I do apart from the papers? LSAT के लिए I don't think you do anything else. Newspaper पे थोड़ा सा time spend कर दो, like half an hour. You can just read सुबह उठ के, just pick out the newspaper, read Penny or important the Hindu? anything. I'm telling you, it's not at all specific as to what newspaper you should stick to. Just Sir, but GK in here, so why do we need newspaper and no, just so to much? develop a habit of reading. That's what my point is. Yeah. जैसे op-ed पढ़ना, op-ed पढ़ लो, opinion editorial 2 pages पढ़ो बस रोज, and that would be sufficient, more than sufficient in my opinion. Okay. Sir, explained section of Indian Express. Yeah. You can read that as well. That's good. ठीक है. Okay. Any other questions? ठीक है. Okay. चलो. Sir, Yeah. sir, how is BITS Law School? No. Don't go for these colleges, please. बिट्स विट्स मत जाओ, पता नहीं कहाँ, गोवा क्यों जाना है आपको? बिट्स गोवा ना, you are asking me about. Sir, Sir, it's Mumbai. बिट्स Mumbai. Yes, sir. Not heard a lot of things. It's a new college, so I would not say कि especially people from Delhi NCR should go to Mumbai, and that too for bits.
You can go for any other MHCT college, that will be better. BITS has a very high fee also, so it's better. देखो BITS से अच्छा तो जिंदल ले लो, जिंदल बहुत easily आपको ले भी लेगा, and BITS is as expensive as जिंदल, and the disadvantage is Maharashtra, so language barrier is always there if you want to practice. So I don't think you should opt for BITS because it's fairly recent, fairly new, not even a single batch has come out, so we don't know anything about the college. Sir, Okay. NLU Prayagraj, the new one. Okay, sir. NLU Prayagraj you can think about going to if you have judiciary or litigation in your mind, because again the Allahabad High Court is one of the oldest, not one of the oldest High Court of India, and also the largest High Court of India. So litigation के लिए या judicials के लिए Prayagraj is a good option. You can think about it. Sir, how we can apply for that? Like, I'm not getting the. Abhi they have not released the application link. It will come on the website. They have written it on the website that it will come soon, so you can just keep checking the website. अभी तक generate नहीं हुआ link. Link जब generate होगा then you can apply. Okay, sir. Okay, चलो ठीक है. Thank you for attending everyone. By the way, I'll upload this on the YouTube as well, so you can all see this again if you want to see this. बाकी आप लोग ना डीएम्स मुझे थोड़ा मत करना प्लीज, बिकॉज डीएम्स ना गलती से इग्नोर हो जाते हैं बहुत बार. सो ट्राई टू पुट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द चैनल ओनली, बिकॉज वहां पर ना जब एक जगह सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इट्स इजियर फॉर मी टू आंसर ऑल्सो, एंड इट्स इजियर फॉर अदर्स टू ऑल्सो सी द आंसर, because that might be a common question to everyone. Okay, so whenever you get a question, just put a comment in the channel and I'll answer you within a day. Okay, chalo, thank you for attending everyone. Best of luck. Thank Bye-bye. you, sir. Welcome.